Dr. Farah, I'm just giving your brief introduction. There are 2, 3 students join, and slowly and gradually they will keep joining as we move on. Uh, so I'm just introducing you. This is live on YouTube. I have shared the link as well, so anyone can watch it on the YouTube as well, apart from Zoom. So it is going on records, and the first year student will take advantage later on. So you can also use this video for your channel as well. It is going on records. So I'm just welcoming all our students on Summer Health Professional Education Program 2023. This is our maiden effort, our endeavor to give you medical education in very lucid and easy way, so that you can hone your basic understanding of your anatomy, physiology, and biochemistry. Because the basic science is very important, and with this basic science, this is a foundation stone. And if you have a good command on this, you would have better understanding of clinical and clinical subjects and all. So today we are privileged that we have Dr. Farah with us. She is a professor in Department of Anatomy in Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, Aligarh. She is having more than 2 decades of experience in teaching undergraduates and postgraduate students in Central University, Aligarh Muslim University. She's also running a very good YouTube channel, so maybe you can refer her channel for understanding complex embryology subject. Her interest area is embryology, so that's why she is also the member of editorial board of introducing embryology for the first year students. So I think everyone is, because this is the main book every all Indian students referring in their first crop across the country. So she is in their editorial team, and she would be talking today on very important topic, that is basics of embryology, that development of pharyngeal arches and pouches and their fate. And next Sunday on 30th July, she will again join, and then she will talk about development of the other chapter on embryology. So with these brief introduction, over to you, Dr. Farah, to start your lecture. Thank you. Thank you, Dr. Nurul. So I'm going to start my screen sharing. Yes. So is it visible to everyone? Yes, visible. Okay, so when we talk about embryology, apart from general embryology, what we talk first in systemic embryology is about the pharyngeal apparatus. Now, pharyngeal apparatus is basically composed of 3 structures, or rather you can say 3 things that make up the pharyngeal apparatus. They are pharyngeal pouches, pharyngeal clefts, and pharyngeal arches. So each arch is basically having pharyngeal pouch, that is ectodermal in nature, pharyngeal cleft, that is ectodermal, and the arch itself is mesodermal in nature. So by the end of the class, if a student is attending this, he should be able to describe the development and fate of pharyngeal arches, clefts, and pouches, along with the associated structures related to the arches, clefts, and pouches, that is the thyroid gland, parathyroid, thymus, as well as tonsil. And one should know when the normal is there. When you know the normal, anomalies are also associated with it. So you should know the anomalies related to them. So starting with the development and fate of pharyngeal arches, this is the pharynx. Okay, and as I've told you, this is an arch. It has got ectodermal clefts
and endodermal pouches, with the mesoderm in between that comprises the pharyngeal arch itself. And this arrangement is from cranial to caudal. See, this is cranial and this one is caudal. So this is the region of the pharynx where the pharyngeal arches are developing. Basically, in a developing embryo, when you will see the side view of a developing embryo, as you can see here, this is a side view of a developing embryo, the developing brain and the developing pericardium over here. And this region is the region of the neck where the pharyngeal arches develop and then they elongate. And finally, the neck becomes smooth by the development of second pharyngeal pouch, second pharyngeal arch that overgrows and makes the neck outline smooth. So this view is basically the lateral view of a developing embryo, where you can see the developing brain and the developing pericardium. That is the region of the future heart. Cranially, it is separated from the stomodium by the buccopharyngeal membrane. When you see the developing gut, basically the foregut, midgut and hindgut, they develop from endoderm. And the cranial most part is separated from the stomodium by the buccopharyngeal membrane, which dissolves later to form the future mouth. See, as you can see here, the foregut opens to the exterior through the stomodium. So this is another view where you can observe the developing brain and the developing pericardium along with the arches developing in succession from 24 days gradually up to 28 days. Initially, there was one arch only, then first, second, and third, and then first, second, fourth, and sixth later on develops. So from day 24 to day 28, all the arches finally develop. Now, why this term has been coined? Why it has been named as branchial or pharyngeal? That I'm going to tell you. See, it is derived from a Greek word branchia, which means respiratory organs or gills of a fish. And branchial is in Latin, which means resembling gills of a fish. So in human beings, you see that actually the gills of a fish are not there. They resemble the gills of a fish. And when they are present in the region of the pharynx, so instead of getting named as branchial, because they're just resembling the gills of a fish, they have been named as pharyngeal arches because they are present in the region of the pharynx. Pharynx is throat, basically. So they have been named as pharyngeal arches. And likewise, pharyngeal clefts and pharyngeal pouches, because they just resemble the gills of a fish, not exactly the gills of a fish. In lower animals, when they are present, they are known as branchial arches. But in human beings, they have been named as pharyngeal arches because they just resemble the branchial arches. They are not exactly the branchia. So there's one thing that in fishes, gills are always present. Likewise, also in amphibians, frogs and all. But real gills are never formed in human embryo. That is why the term pharyngeal has been adopted for human embryo. Now we have taken this section where you can see, this is the section of the developing pharynx, where you can appreciate that this is the primitive pharynx and it is surrounded on either sides by the mesoderm, which forms the pharyngeal arch, by an endoderm forming the pharyngeal pouch, and an ectoderm that dips and forms the pharyngeal clefts. So mesoderm with the endoderm and ectoderm, completely they form the pharyngeal apparatus. Right? Now these mesodermal thickenings have been named as pharyngeal arches. They have been numbered from first to sixth, first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Initially, they are 6 in number, but the fifth one retrogresses and just the 5 of them remain, and they are responsible for various derivatives which are forming by these arches. So this one is a view where you can appreciate the pharyngeal arches
first, second, third, fourth, and sixth, and the pharyngeal pouch along with the pharyngeal cleft. Now, each arch basically has got certain components. These components are the artery, cartilage, which may or may not convert to bone. Then there is a muscle and the nerve of that particular arch, which supplies the muscle. Now, this nerve is carried to the muscle where it is finally reaching its destination, so that you can identify with the nerve of that arch if it is derived from which arch exactly. So muscle goes to the destination and it carries with it the nerve of that particular arch, so that you can make out how the muscle is related to the nerve and to that particular arch. So you can see here a core of mesoderm derived from paraxial mesoderm and neural crest cells. Then there is a cartilaginous bar which is derived from neural crest, an artery that is known as pharyngeal arch artery, obviously from the aortic sac, and a nerve of that arch. So these things, they comprise the pharyngeal arch and they are differently named for different arches. Now there is one term that is post-traumatic and pre-traumatic nerve of that particular arch. Each arch has got a pre-traumatic nerve and a post-traumatic nerve. So if you see here, this is first arch, second arch, third arch, right? They are from cranial to caudal. Arrangement is from cranial to caudal in the form of first, second, third, fourth, and finally sixth arch. The nerve of that particular arch itself is the post-traumatic nerve, and the nerve which is borrowed from the successive arch is the pre-traumatic nerve. Now, you all must be knowing what is trema. Trema hota kya hai? In English, if you see the literal meaning, तो trema जो है वो एक गड्ढे को कहते हैं, like a hole dug in the ground is trema. That is the reason why this has been named as pre-traumatic and post-traumatic. गड्ढे से पहले वाली नर्व और गड्ढे के बाद वाली नर्व, ठीक है? तो गड्ढे से पहले वाली जो नर्व है वो तो प्री-ट्रॉमेटिक हो गई और गड्ढे के बाद वाली नर्व जो है वो पोस्ट-ट्रॉमेटिक होगी. तो the depression between the two arches is basically named as trema. So what happens? Lower animals में तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आर्चेस की दो नर्व्स होती है, प्री भी होती है, पोस्ट भी होती है. लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स में एक खासियत है कि ये सिर्फ फर्स्ट आर्च में हमारे पास है पोस्ट और प्री ट्रॉमेटिक. बाकी सब आर्चेस में उनकी अपनी नर्व ही है, दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक नर्व. प्री ट्रॉमेटिक नहीं होती है. तो ये फर्स्ट आर्च की खासियत है कि हमें प्री ट्रॉमेटिक भी मिली हुई है और पोस्ट ट्रॉमेटिक भी मिली हुई. पोस्ट ट्रॉमेटिक फर्स्ट आर्च की नर्व के, फर्स्ट आर्च की नर्व बेसिकली जो है मैंडिबुलर नर्व है, ठीक है? मैंडिबुलर नर्व तो सप्लाई कर ही रही है फर्स्ट आर्च को, ठीक है? लेकिन उसके साथ में सेकेंड आर्च से एक ब्रांच आती है, उसको हम कहते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई, क्योंकि सेकेंड आर्च की नर्व है फेशियल नर्व. फेशियल नर्व अपनी एक ब्रांच देता है जो कॉर्डा टिम्पेनाई है और कॉर्डा टिम्पेनाई फर्स्ट आर्च को सप्लाई करती है. इसकी अहमियत हमें तब समझ में आएगी जब हम टंग का डेवलपमेंट पढ़ेंगे. आज तो यहाँ टंग का डेवलपमेंट नहीं, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ intro to that, how this anterior two-third of tongue is supplied by dual nerve and what is the role basically of that dual nerve. तो first arch की nerve है. यहाँ अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ देख रहे हैं आप first arch से relation बीच में pharynx के, you can see two lingual swellings and one tuberculum impar. This whole structure is responsible for the formation of anterior two-third of tongue. तो एंटीरियर टू-थर्ड ऑफ टंग जो बन रही है वो फर्स्ट आर्च से बन रही है और फर्स्ट आर्च की वजह से ही इसमें ड्यूअल नर्व सप्लाई है. तो जनरल सेंसरी इनोवेशन इज बेसिकली बाय द लिंगुअल नर्व, दैट इज इटसेल्फ अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर. फर्स्ट आर्च की नर्व है मैंडिबुलर जो है एक ब्रांच देती है लिंगुअल. टंग है, टंग का दूसरा नाम हम लिंगुअम भी कहते हैं और लिंगुअम इज टंग. तो
अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, लिंगुम, ग्लॉसिया, ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू द टंग ओनली। तो जब नर्व की बात आती है, आर्टरी की बात आती है, वेन की बात आती है, तो हम लिंगुअल नर्व, लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल वेन की बात करते हैं। और जब हम कुछ उसकी एनोमलीज की बात करते हैं तो ग्लॉसिया यूज करते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर बेसिकली रिलेटेड टू द टंग ओनली। कोई ग्रीक है, कोई लैटिन है, व्हेन यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट यू विल कम टू नो हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड। So anterior two-third of tongue basically has got pre-traumatic and post-traumatic nerves. Post-traumatic nerve जो है वो mandibular है, mandibular अपनी एक ब्रांच देती है जो lingual nerve है, और pre-traumatic जो है वो facial से आती है, वो chorda tympani है। तो special sensory जो है that is taste is carried by the chorda tympani, anterior two-third of tongue, whereas the general sensory innervation of the tongue is by the lingual nerve, which itself is a branch of mandibular। और mandibular किसकी branch है finally? Mandibular is a branch of trigeminal। ओके, इसीलिए सेंसरी सप्लाई सारी सब ट्राइजेमाइनल से होती है। तो आई होप दैट आई मेड इट क्वाइट क्लियर कि क्यों टंग की सप्लाई ड्यूअल इन नेचर होती है, एंटीरियर टू थर्ड की, पोस्टीरियर वन थर्ड की एक ही नर्व होती है। अब आर्चेस की बात करें अगर, तो ये एक बेसिक चार्ट है जिससे डेरिवेटिव्स शो हो रहे हैं डिफरेंट आर्चेस के। पहला आर्च जो है वो मैंडिबुलर आर्च है, उसका नाम ही मैंडिबुलर आर्च है। ठीक है, तो मैंडिबुलर आर्च है, उससे हम समझ सकते हैं कि मैंडिबल से जो चीजें कनेक्टेड हैं वो सारी चीजें मैंडिबुलर आर्च से डिराइव्ड हैं। ठीक है, और उसको हमें याद करने में आसानी, क्योंकि एम फॉर मैंडिबुलर, एम इज मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, एम इज माइलोहाइड, दो तीन चीजें और हैं, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर पैलेटाई और टेंसर टिम्पेनाई, वो अलग बात है, बट मैक्सिला और मैंडिबल की जो सारी बोन्स हैं वो सब एम से हैं स्टार्टिंग। मैंडिबुलर, मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर से मैस्टिकेशन की मसल्स, और मैंडिबुलर से ही सारे मैकल्स कार्टिलेज है, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस है, सब ज्यादातर आप देखेंगे इसमें कि सब चीजें एम से ही मिल रही हैं, तो हमें याद करने में आसानी हो जाती है। वी फाइंड अ वे आउट हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेम्बर, बिकॉज एनाटॉमी ऐसे तो लर्न हो ही नहीं सकती ना, हमें कुछ ना कुछ अपने लिए यूज करना पड़ता है, कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स हमें देखनी पड़ती हैं। तो दैट इज हाउ मैंडिबुलर आर्च है, मैंडिबुलर नर्व है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है, सब कुछ एम से है, मैकल्स कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट आर्च इज बेसिकली मैकल्स कार्टिलेज, मैंडिबल में होता है। मैंडिबुलर नर्व है और मसल्स ऑफ मास्टिकेशन भी कहीं ना कहीं मैंडिबल से ही कनेक्टेड होती है। माइलोहाइड मसल है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक भी मैंडिबल पर आती है, टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर पैलेटाई एडिशनली हमें याद करनी पड़ेगी। देन वी हैव द सेकेंड आर्च। सेकेंड आर्च का नाम जो है वो हायर्ड से है, तो हमने उसे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि हायर्ड आर्च कहते हैं इसे। तो सेकेंड आर्च की नर्व जो है वो फेशियल है, फेशियल नर्व है तो इसका मतलब है फेशियल मसल्स ही सारी सप्लाई हो रही हैं। ठीक है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस बेसिकली अलोंग विद द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और एस से जो स्ट्रक्चर्स हैं सेकेंड आर्च, सेकेंड इज एस, तो इसीलिए स्टेपीडियस है, स्टाइलोहाइड है क्योंकि वो हाइड से कनेक्ट हो गई, स्टेपीडियस है क्योंकि स्टेपीज जो है वो स्मॉलेस्ट जो बोन्स हैं ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, तो मैलियस और इनकस तो फर्स्ट आर्च से होती है और स्टेपीज सेकेंड आर्च से होती है। अब स्टेपीज है तो स्टेपीडियस मसल भी हो गई, स्टाइलॉइड प्रोसेस है तो स्टाइलोहाइड मसल भी हो गई, स्टाइलोहाइड लिगामेंट भी हो गया, along with the lesser horn, or you can say the smaller horn of hyoid, along with the superior portion of the body of hyoid। तो हम सब चीज याद कर सकते हैं एस से। दो आर्चेस तो कम से कम हमें याद ही रहेंगे कि मैंडिबुलर एम से है और मैंडिबल से ही रिलेटेड सारा कुछ है फर्स्ट आर्च में, सेकेंड आर्च में हायर्ड से सब कुछ रिलेटेड है, प्लस स्टेपीज बोन से है। देन वी हैव थर्ड आर्च, उसका कोई नाम नहीं है, just the third arch, and the nerve is glossopharyngeal, that is the ninth cranial nerve। glossopharyngeal है तो हम यहाँ मसल याद कर सकते हैं स्टाइलोफेरेंजियस। ठीक है, और जो पोर्शन हमने हाइड का सेकेंड आर्च में कवर कर लिया था उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सब थर्ड आर्च से डेवलप होता है, दैट इज ग्रेटर हॉर्न एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड बोन। देन वी हैव fourth to sixth arches, fourth and sixth means fifth is retrogress,
So it is supplied by vagus, fourth arch by the superior laryngeal, and sixth arch by the recurrent laryngeal nerve. Laryngeal cartilages along with the muscles of larynx and pharynx are supplied by the fourth and sixth arch. This is the brief overview of how the arches are derived. We'll take up them one by one. This diagram we have already seen. If you have gone through an individual thing, this is the diagram that is there, and you can very well make out how you can remember these structures according to the diagram, because anatomy is all about drawing the diagrams. If you do not draw the diagrams, you won't be able to recall the structures or write them in the examination or answer them in the viva. अगर आपने diagram बना लिया है और उसको अच्छे से label कर दिया है, तो you have mastered half of the anatomy. लिखना बाकी आपका काम है. So first arch is mandibular arch. We have used here the red color. This is malleus and incus. Sphenomandibular ligament. Sphenoid, spine of sphenoid is there, and the lingula. Sphenomandibular ligament. Then this is Meckel's cartilage. Here it is interrupted, and then there's on the opposite side you can see the complete arch. The complete cartilage. So this is the Meckel's cartilage again with them, and the first arch is the Meckel's cartilage, mandibular arch, malleus and incus are the bones, and these are the ligaments. Then first arch की muscles breakup करके यहाँ दिखा दिया है कि bones कौन सी हैं, maxilla, zygomatic, temporal, and the mandibular process which differentiates into malleus, incus, anterior ligament of malleus, sphenomandibular ligament, and the mandible itself. Muscles of mastication, as I've already told you, tensor tympani, tensor palati, along with the mylohyoid and the anterior belly of digastric. The artery of the first arch is basically the maxillary artery, and the nerve is mandibular nerve. Then comes the second arch. The second arch is the hyoid arch, and everything related to the hyoid is derived from the second arch, along with the structures which are related to the stapes bone, that is the ear ossicle. Now the cartilage of the second arch is known as Richard's cartilage. See, Richard's here is written with a capital R, and there Meckel's was written with the capital M. Meckel's and Richard's both were German anatomists, after which the cartilages are named. So they are written with the capital letter because they are the proper names, right? So the stapes, that is the bone of the middle layer, structures derived are stapes, styloid process, then stylohyoid ligament. This is the hyoid bone and styloid process. So the ligament between is the stylohyoid ligament. Muscle again is the stylohyoid muscle. Then we have smaller cornu of the hyoid bone and the upper part of the body of hyoid. It is all shown in green. Muscles of the scalp and face are basically derived from the second arch because the facial nerve is the nerve that is supplying. So muscles of facial expression are basically from the second arch. They include platysma, stylohyoid, stapedius muscle, and the posterior belly of digastric. The artery of this arch is basically the stapedial artery. Again with S, you can remember stapes से related कोई muscle है, कोई artery है. You can remember it like this. Then comes the third arch. Third arch में nerve जो है वो glossopharyngeal है. Then we have stylopharyngeus muscle. Only one muscle is there. Pharyngeus. ठीक है, glossopharyngeal और glossopharyngeal से related muscle है stylopharyngeus. Right. We have the nerve, that is the glossopharyngeal, and muscle is only one. There's no named cartilage. The bones are the greater cornu and the lower part of the body of hyoid. That was from the third arch. Coming to the fourth arch and sixth arches, basically they are supplying the muscles of larynx and pharynx along with the cartilages of larynx. That's about the fourth and sixth arches. Here the breakup has been given. You can see third arch, fourth arch, and
sixth arch. Now coming to the somatomeres. See, somatomeres are basically very important, and from this study of somatomeres, basically you can make out how the muscles and the nerves are correlated to each other because of their developmental origin. सोमाइटोमेयर्स बेसिकली पैराएक्सियल मेसोडर्म से बनते हैं. पैराएक्सियल मेसोडर्म कहाँ है? अब हम जनरल एम्ब्रियोलॉजी की तरफ थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू लें तो नोटोकॉर्ड थर्ड वीक में बन रहा होता है. नोटोकॉर्ड के साइड में, दोनों साइड में फिश टेल अपीयरेंस होता है, दैट इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इफ there is partitioning occurs by the side of notochord. So दोनों साइड नोटोकॉर्ड के जो चीज डेवलप होती है वो होती है पैराएक्सियल मेसोडर्म. बेसिकली नोटोकॉर्ड को हम सेंट्रल एक्सिस मानते हैं. लोअर एनिमल्स में सेंट्रल एक्सिस ही होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में इट इज जस्ट द न्यूक्लियस पल्पोसस दैट इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, दैट you will see only in the intervertebral disc, right? So paraxial mesoderm basically gives rise to the somites, that is the muscles are finally formed from the paraxial mesoderm, right? And these somatomeres are numbered from 1 to 7, and then there are occipital somites also, they are numbered from 1 to 5. तो ये एक मैंने tabular form में, this is for your remembrance. आप इसको कैसे रिमेम्बर करते हैं ये आप अपना एक तरीका बना सकते हैं. This is how I remember. So I have drawn a table here. You can make out somatomere 1 and 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and then there are occipital somites 1 and 2 or 3 to 5. ठीक है. अब somatomeres 1 and 2 में 1 and 2 हमने करा इसको, तो चाहे आप इसे ऐसे कहें कि 1 + 2 कर लें 3 हो जाएगा, या फिर हम 1 में 2 में एक 1 ऐड कर देंगे और वो 3 हो जाएगा. So basically muscles supplied by the oculomotor, that is from the third cranial nerve, are basically derived from this somatomere 1 and 2. Then we have superior oblique. यहाँ fourth cranial, SO4 जो कहते हैं, superior oblique trochlear nerve से सप्लाई होती है, और ये somatomere 3 से है. 3 पे 1 ऐड किया, फोर्थ हो गया. फोर्थ cranial nerve जो है बेसिकली वो थर्ड somatomere को सप्लाई करता है. फोर्थ सोमाइटोमेर की सप्लाई फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की मैंडिबुलर नर्व है, जो मतलब फर्स्ट आर्च की मसल जो हैं वो फोर्थ सोमाइटोमेर से डिराइव्ड है, और उसकी नर्व क्या है, एक ऐड करने के बाद फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ब्रांच, दैट इज मैंडिबुलर ऑफ्थैल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर, थर्ड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व. फिफ्थ सोमाइटोमेर से एक और ऐड कर दिया इसमें, तो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की जो सप्लाई है, that is lateral rectus only. Then we have sixth somatomere, again adding 1, muscles of second pharyngeal arch, that is by the facial nerve. Excuse me, please. Then we have the occipital somites 1 and 2. Now the occipital somites 1 and 2 are basically supplied by the 10th cranial nerve. इसके लिए कोई as such वो चार्ट हमने नहीं बनाया, लेकिन हम यहाँ देखेंगे अगर 9th cranial nerve जो 7th सोमाइटोमेयर में 2 ऐड करने से बन रहा है, वो 9th cranial nerve से सप्लाई, 9 के बाद 10th और 12th तो रहती हैं, तो 10th cranial nerve occipital somites 1 and 2 को सप्लाई करती है, और occipital somites 3 to 5 से जो derived होती है muscles of tongue, they are basically by the 12th cranial nerve. So this is how I remember the somatomeres. I hope that is clear. So moving forward, we come to the fate of pharyngeal clefts and pouches. One by one we'll take up. As we have already seen, this was ectoderm and this one was endoderm. Dipping inside is the endodermal pouch, and on the outside it is the cleft. So first we'll talk about the cleft. First pharyngeal cleft is basically responsible for the formation of external acoustic meatus. See, this is the area, that is the first pharyngeal cleft.
This first pharyngeal cleft is basically forming the external acoustic meatus, and this is covered on outside by the auricle. So auricle, that is, this whole structure is the auricle, and it is derived from auricular proliferations. That is the mesenchymal proliferations, which are 6 in number, and they are responsible for the formation of the auricle as a whole. They are also known as hillocks. As you can see here, the auricle develops from 6 mesenchymal proliferation: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this is in relation to the first cleft. And these basically, they rearrange themselves 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And finally, this is how the auricle is formed. This is the lobule where the girls get their ears pricked for their beautification. So they fuse and they form the definitive auricle as such, right? Now, one thing is, this is just the first cleft that is responsible for the formation of external acoustic meatus. Second pharyngeal arch जो है वो अपना overhanging projection एक नीचे की तरफ डाउन ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो कि सारी क्लेफ्ट्स को कवर कर लेता है, और यहाँ ये इपिकार्डियल रिज है. इपिकार्डियल का मतलब है अपॉन द हार्ट, ठीक है. ये इपिकार्डियल रिज जो है, ये सेकेंड फेरेंजियल आर्च के डाउनवर्ड प्रोजेक्शन से आके फ्यूज हो जाती है, और ये सारी क्लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्लेफ्ट, दे गेट कवर्ड and the neck becomes smooth outline because of this downward projection of the second pharyngeal arch, which fuses with the epicardial ridge, and the space enclosed is known as cervical sinus. As you can see here, this is a space enclosed which is known as cervical sinus. This is not normally present. It gets obliterated by the time of birth, and this becomes a smooth outline. But in certain cases, as you can see here in the anomalous development, sinus persists in the form of cyst along the anterior border of sternocleidomastoid muscle. See, this is sternocleidomastoid muscle. Sternum, mastoid or clavicle. Cleido is clavicle, sternum is sternum, and mastoid is mastoid process. So इसीलिए इसका नाम है sternocleidomastoid muscle. Now, ये रप्चर भी हो सकती है. ये सिस्ट जो है along the anterior border of sternocleidomastoid muscle होती है, और यूजुअली जो है angle of mandible के नीचे प्रेजेंट होती है. It may sometimes rupture and forms the sinus. So sinus is basically connection between two anatomical spaces जो बाहर की तरफ खुल जाते हैं, आके ओपनिंग हो जाती है और वो उससे ड्रेनेज होता है. इंटरनल ब्रैंकियल साइनस भी हो सकता है. वो सेकेंड पाउच और सेकेंड क्लेफ्ट के रीजन में होता है, दैट इज इन द रीजन ऑफ टॉन्सिल. वहां पर ही ओपन करता है, बट इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन. नॉर्मली ब्रैंकियल सिस्ट होती हैं जो कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ sternocleidomastoid पे एज swellings they appear, and they may have an opening in the form of a sinus. Then there could be a fistula also, branchial fistula या cervical fistula. उनकी भी opening inside या outside depending upon the external or internal nature पे होती है, और उसके according वो open करती है. So this is the applied aspect, or you can say the anomalous development of the branchial sinus or the cervical sinus into the cyst. This is a bigger picture where you can make out how these sternocleidomastoid muscle is there and how the cysts are there along the anterior border near the angle of mandible. And when you come to talk about the internal branchial fistula, it is in the region of the tonsil, and this is the internal branchial fistula opening into the region of tonsil. This one is external branchial fistula, which has got the opening at the outside in the region of the neck only. Coming to the pharyngeal pouches. Now, pharyngeal pouches are basically derived from the endoderm, as we have already talked when we started the pharyngeal apparatus. So they are basically the balloon-like diverticula formed from the endoderm,
between the pharyngeal arches, and they also are in the craniocaudal sequence. So they are numbered from 1 to 4. Fifth is absent because the fifth arch is also gone. First pharyngeal pouch. Now the first pharyngeal pouch is basically forming the tubotympanic recess. If you take this view, this one was the external acoustic meatus developing from the first cleft, and it is in close approximation to the pouch. So the first pouch and the first cleft, they are in close approximation. This is first endodermal pouch responsible for the formation of tubotympanic recess. Tubotympanic, दो चीजों से बना है, ट्यूबो और टिम्पैनिक. तो ट्यूबो से मतलब हो गया कि यूस्टेशियन ट्यूब बन रही है, और टिम्पैनिक से मतलब हो गया कि टिम्पैनिक कैविटी और द मिडल ईयर कैविटी इज देयर. So proximally it is the external, the eustachian tube. This one is eustachian tube, and the distal part is the middle ear cavity. That is from the first pouch. Again, this diagram is a bigger picture where you can very well appreciate how the external acoustic meatus is in close approximation with the eustachian tube and the middle ear cavity. Right? This is tympanic cavity and the eustachian tube. Then coming to the second pouch. Second pharyngeal pouch is basically the primordium of the palatine tonsil. During the third and fifth month, the tonsil gets infiltrated by the lymphatic tissue, that is T and B lymphocytes. They are coming from the bone marrow and getting infiltrated into the mesodermal origin of the tonsil. So basically, the palatine tonsil is formed from the second endodermal pouch. Here you can see the crypts are there in the tonsil. The tonsillar crypts are basically endodermal in nature. Framework of the tonsil is mesodermal, and it gets infiltrated by the lymphatic tissue, that is the B and T lymphocytes coming from the bone marrow. This is about the palatine tonsil. It begins to develop in the third month of intrauterine life. And as I've told you, the crypts are endodermal. There's mesodermal framework and the lymphocytes get infiltrated. Coming to the third pharyngeal pouch. Now, third and fourth pharyngeal pouches, they both develop into dorsal wing and the ventral wing. Dorsal wing is basically responsible for the formation of inferior parathyroid gland. See, dorsal wing and the ventral wing. So dorsal wing is forming the inferior parathyroid gland. It is from this region that it is migrating down, and along with the thymus that is formed from the ventral wing. When thymus is carried down in the anterior mediastinum, it carries along with it the dorsal wing structure also, that is the inferior parathyroid. Thymus के साथ carry down हो रहा है और inferior parathyroid आकर thyroid के lower pole पर arrest हो जाता है और thymus अपनी जगह चला जाता है. So it is carried along with the thymus and gets arrested at the lower border of thyroid gland to form the inferior parathyroid. That is why the two structures are developing from the same pouch, that is the third pharyngeal pouch. So in this diagram, you can very well make out how the migration is. Along with the thymus, inferior parathyroid from the third pouch developing from the dorsal wing is carried downwards and gets arrested. Now the growth and development of the thymus continues until puberty. And in older age, it gets atrophied and is replaced by the fatty tissue. Again, when we talk about the thymus, thymocytes are endodermal. That is, they are derived from the third pouch with the mesodermal framework, same as of tonsil, and the lymphocytes are derived again from the bone marrow. So they are also similar in origin as that of tonsil.
This is how both the inferior parathyroids and the thymus is carried downward and gets arrested at the lower border. This is also the same migration of thymus is shown. The thymus develops in the 4th to 7th week, and in the 10th week, lymphocytes colonize from the bone marrow as well as from the liver, and the connective tissue mesenchyme is forming the tissue septa. Now the fate of the 4th pharyngeal pouch, again it has got dorsal and the ventral wings. These two wings are responsible for two different structures. Dorsal wing 3rd pouch का inferior parathyroid बना रहा था और 4th pouch का superior parathyroid बनाएगा. तो मूवमेंट कैसे हो रहा है? ये थायराइड ग्लैंड है और यहाँ थाइमस था. ये वेंट्रल विंग थाइमस को कैरी कर रहा है नीचे नेक में और इंफीरियर पैराथायरॉइड यहाँ अरेस्ट हो गया. 4th का जो डॉर्सल विंग है वो सुपीरियर पैराथायरॉइड बना रहा है और वेंट्रल विंग जो है वो सी सेल्स ऑफ द थायरॉइड बना रहा है. सी सेल्स responsible for the secretion of calcitonin which helps in regulation of calcium in blood. ये होता है थायराइड में ही है, ये जाके थायराइड में आ जाता है. अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी से जो जिसे हम कहते हैं कि डिराइव्ड है, वो कुछ लोग कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि वो रेमिनेंट है 5th पाउच का, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक अलग एंटिटी है. तो इट्स अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग, बट जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग दैट वी हैव 4th pouch with the dorsal and ventral wings. और जो हम लैंगमैन में पढ़ते हैं वो यही है कि 4th pouch से डॉर्सल और वेंट्रल विंग्स आते हैं, वेंट्रल विंग से सी सेल्स ऑफ थायराइड बनते हैं जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, अल्टीमेटली कैल्शियम लेवल उससे रेगुलेट होता है. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड एंड द थायराइड सी सेल्स एंड द सुपीरियर पैराथायरॉइड इज फॉर्म्ड. This is again the same. You can see from both the sides, dorsal wing or ventral wing से thymus और parathyroid आ गए, 4th से superior parathyroid और C cells आ गए thyroid में. थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट. थायराइड ग्लैंड फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो 24 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की तरह शुरू होता है. क्या होता है कि यहाँ पर जो हम फर्स्ट आर्च जब देख रहे थे तो हमने देखा था कि 2 लिंगल स्वेलिंग्स और ट्यूबरकुलम इम्पार था. ट्यूबरकुलम इम्पार के पीछे एक छोटा सा फोरामेन है, मतलब एक डिप्रेशन होता है. वो डिप्रेशन जो है वो उसमें से एक नेक में ही या फेरिंग्स में आप कह सकते हैं कि एक डाइवर्टिकुलम नीचे जाता है. वो डाइवर्टिकुलम जो है फाइनली बाइलोब्ड हो जाता है, बाइफरकेट कर जाता है या बाइफिड बन जाता है, और उससे जब उनके सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं तो वो 2 थायराइड के लोब्स बन जाते हैं. और वो जो डाइवर्टिकुलम की साइट है उसको हम नाम दे देते हैं फोरामेन सीकम. इट्स अ ब्लाइंड फोरामेन. तो foramen cecum is basically a blind foramen just caudal to the tuberculum impar, and that is the site for the development of diverticulum that is growing downwards in the middle of the neck and forming the thyroid gland by getting bifid at its end or at its tip. This is the picture I have taken. This is foramen cecum. डिप्रेशन है ये, और ये एंडोडर्मल थिकनिंग है जो इन द फॉर्म ऑफ डक्ट ग्रो करती है नीचे. दैट डक्ट हैज बीन नेम्ड एज थायरोग्लॉसल डक्ट. ठीक है, थायरोग्लॉसल मतलब थायराइड और ग्लॉसस इज टंग. तो यहाँ टंग बन रही थी ना, टंग के पीछे से ही एंटीरियर 2/3 से एक डिप्रेशन अपीयर हो रहा है. तो इसीलिए इसका नाम जो है थायरोग्लॉसल डक्ट है. ये थायरोग्लॉसल डक्ट बेसिकली जो है नीचे आके बाइफिड हो जाती है और 2 लोब बना देती है थायराइड के. ठीक है, and these 2 lobes are basically connected by the isthmus in the middle, and sometimes another lobe is present which is developing either from the 2 lobes of thyroid or directly out coming from the isthmus of the thyroid. That is known as pyramidal lobe.
तो थायराइड अपनी फाइनल पोजीशन ट्रैकिया के सामने जो है 7th वीक में अचीव कर लेता है और उसका फंक्शन जो है वो 3rd मंथ में स्टार्ट हो जाता है। तो थायराइड इनिशियली जो है वो टंग से कनेक्टेड रहता है, लेकिन लेटर ऑन थायरोग्लॉसल डक्ट डिसअपियर्स एंड थायराइड रीचेज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। Now coming to the anomalies related to the development of thyroid. Anomalies जो है वो क्लासिफाई करी गई हैं शेप के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, और फिर थायरोग्लॉसल डक्ट की एनोमलीज अलग है। तो शेप में क्या होता है, इस्थमस जो है वो एब्सेंट भी हो सकता है। इस्थमस मतलब जो हमने अभी ये देखा था, कनेक्शन बिटवीन द टू लोब्स, दो लोब जिनसे कनेक्टेड होते हैं, दैट इज इस्थमस। तो इस्थमस एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। पूरा एक लोब भी एब्सेंट हो सकता है दोनों साइड का, मतलब या तो यूनिलेटरल एब्सेंस है या फिर बायलेटरल, बहुत रेयर होता है, बट समटाइम्स इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज यूनिलेटरली द either of the lobe is absent and that is the anomalous situation. Pyramidal lobe इतनी frequently present होता है कि sometimes we consider it as a normal structure. It may arise either from the isthmus या फिर किसी भी लोब से arise सकता है। कनेक्शन इसका थायराइड से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थायराइड बोन से भी कनेक्टेड हो सकता है थ्रू अ स्टम्प दैट इज लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी। एनोमलीज ऑफ पोजीशन की बात करें अगर हम, तो पोजीशन जो है वो कहाँ चेंज होती है, थायरोग्लॉसल डक्ट का मूवमेंट जो है उसके पाथ में कहीं भी थायराइड ग्लैंड डेवलप हो सकता है। तो वो एनोमली हुई पोजीशन की, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया वहां नहीं डेवलप होके पूरे रास्ते थायरोग्लॉसल डक्ट के पैसेज में कहीं भी डेवलप हो जाए, देन इट इज नोन एज एनोमलीज ऑफ पोजीशन। पहला है लिंगुअल थायराइड। लिंगुअल थायराइड क्या हुआ, म्यूकोजा के नीचे है, डॉर्सम ऑफ द टंग मतलब सरफेस ऑफ द टंग के जस्ट म्यूकोजा के नीचे है, वो लिंगुअल थायराइड हुआ, ठीक है। टंग में थायराइड जब सरफेस पे है। इंट्रालिंगुअल इसके सब्सटेंस में है, मस्कुलर सब्सटेंस of the tongue has got a thyroid tissue in it that is known as intralingual thyroid. फिर ये थायराइड थायरोग्लॉसल सिस्ट जो है वो यहाँ कहीं भी हो सकती है। ये हाइड बोन है, हाइड बोन के ऊपर भी हो सकती है, हाइड बोन के नीचे भी हो सकती है। ऊपर है तो सुप्राहाइड हो गई और नीचे है तो इंफ्राहाइड हो गई। तो सुप्राहाइड थायराइड एंड इंफ्राहाइड थायराइड। इंट्राथोरैसिक जब वो थोरैक्स में आ जाए तो इंट्राथोरैसिक हो गया। ये एनोमलीज ऑफ पोजीशन है। अब और भी एनोमलीज हैं, जैसे थायरोग्लॉसल सिस्ट की एनोमली। एक्टोपिक थायराइड टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ये थायरोग्लॉसल डक्ट का जो पैसेज है उसके अलावा भी बॉडी में कहीं अगर थायराइड प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज एक्टोपिक थायराइड टिश्यू। एजेनेसिस मींस कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड बिल्कुल ही वहां नहीं होगा। थायरोग्लॉसल सिस्ट अगर है वो मिडलाइन स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करती है। मिडलाइन स्वेलिंग का मतलब है कि अगर हम मिडलाइन स्वेलिंग्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक स्वेलिंग का नाम लें तो वो थायरोग्लॉसल सिस्ट भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगी। ये एक्सेसरी थायराइड टिश्यू या फिर जो है वो एक्टोपिक थायराइड हो सकते हैं। थायरोग्लॉसल सिस्ट भी बन सकती है और वो डिग्लूटिशन मतलब जब आप कुछ खाते हैं या यहाँ आपको जो नेक में मूवमेंट लगता है डिग्लूटिशन के वक्त इट मूव्स विद swallowing। तो एक्टोपिक थायराइड और थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट आप डिफरेंशिएट करना चाहिए। थायरोग्लॉसल सिस्ट उसका पैसेज जो है थायराइड ग्लैंड बनने के लिए वो थायरोग्लॉसल सिस्ट है, और एक्टोपिक थायराइड टिश्यू उसके अलावा कहीं प्रेजेंट है तो वो एक्टोपिक थायराइड है। पैराथायरॉइड की हम बात कर ही चुके हैं। 3rd पाउच से इंफीरियर पैराथायरॉइड आता है, 4th पाउच से सुपीरियर पैराथायरॉइड आता है और दोनों मिलकर पैराथायरॉइड्स बनाते हैं। So this is just the recall of your previous knowledge. In the inferior parathyroid, it is 5 to 6 weeks. 3rd pharyngeal pouch, dorsal wing की expansion से inferior parathyroid बनता है और inferior parathyroid अपना कनेक्शन थाइमस से लूज करने के बाद
dorsal surface of thyroid gland outside the fibrous capsule gets arrested. Superior parathyroid, again 5 to 6 gestational weeks, मतलब 5 to 6 weeks of intrauterine life. फोर्थ फेरेंजियल पाउच से डॉर्सल विंग से सुपीरियर पैराथायरॉइड बनता है, और ये अपना कनेक्शन 7th वीक पे लूज करके कॉर्डली माइग्रेट करके inferior parathyroid अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है. It starts producing parathyroid hormone by 7th week when bones start ossifying, and fetal parathyroids appear functional. Congenital malformations में एक्सेसरी पैराथायरॉयड टिश्यू भी हो सकता है, एब्सेंस भी हो सकता है, एक्टोपिक भी हो सकते हैं. इंट्राथायरॉयड मतलब इंट्राथायरॉयडल से मतलब है कि थायराइड के सब्सटेंस के अंदर भी पैराथायरॉयड हो सकता है, और डाइजॉर्ज सिंड्रोम भी हो सकता है. दैट इज कंजेनाइटल थाइमिक एप्लेजिया एंड एब्सेंट पैराथायरॉइड्स. क्यों होगा? देखिए यहाँ पे थायराइड भी एब्सेंट है, पैराथायरॉइड भी एब्सेंट है. इसका मतलब है कि 3rd और 4th पाउच जो है वो डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन होता. ठीक है, तो सिम्टम्स जो हैं वो नियोनेटल टेटनी एंड इम्पेयर्ड सेलुलर नॉर्मल ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इम्यूनिटी यहाँ पे क्यों अफेक्टेड होगी? बिकॉज थाइमस भी डेवलप नहीं होगा. जब 3rd और 4th पाउच डेवलप नहीं हुए हैं तो थाइमस भी डेवलप नहीं होगा. दैट इज वन ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन, तो इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी. Now this was all about the development and fate of pharyngeal pouches, clefts and arches. अब जो नीट पीजी में क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आई हैव टेकन अप हियर, एंड if you have any more questions you can ask me in your like comments when you can post those comments. So first question I'm taking up is, which of the following muscles are derived from the first branchial arch? First arch की muscles क्या क्या थी जब हमने अभी पढ़ा था? First arch की nerve थी mandibular, mandible से related, और वो muscles थी muscles of mastication along with the anterior belly of digestive. तो अगर आप यहाँ इसमें देखें, यहाँ से दिया हुआ है muscles of mastication, अगर आप सिर्फ इस पे लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप पूरे सारे पढ़ेंगे ऑप्शंस, और उसके बाद अगर आप उसको लगाने की कोशिश करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट अ कंप्लीट आंसर एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो इट इज द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन अलोंग विद द एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव. पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव सेकंड आर्च से होती है, तो यहाँ देखिए तीसरे में दिया हुआ है एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों, तो वो रॉन्ग हुआ. फिर जीनियोहाइड भी दिया हुआ है इसमें, तो वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हुआ. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी. Then we come to the next question. Pharyngeal mucosa is innervated by the glossopharyngeal nerves because it develops from the glossopharyngeal nerve. किस आर्च की नर्व है? थर्ड आर्च की. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. It is from the third pharyngeal arch. ठीक है. Then this is another question. I've taken it from somewhere. Somatomeres, paraxial mesoderm, cranial to the somites, give rise to much of the skeletal muscle in the head except. And the answer is also given along with the explanation. B correct है. Temporalis tongue muscles. Somatomeres जो है वो muscles of somatomere origin, they include the extrinsic eye muscles, muscles of facial expression, muscles of mastication and of temporalis. Muscles of mastication में temporalis आती है ना, तो यहाँ पे हम जब आंसर देंगे तो temporalis tongue muscles. Tongue muscles and the muscles of larynx are the muscles from the somites, occipital somites. 12th जो occipital somites 3 to 5 थे, उससे हम टंग की मसल्स डिराइव हो रही थी और 12th cranial nerve से सप्लाइड थी. तो दोनों चीजें आ गई इसमें, एक एक नहीं हम इंडिविजुअल लेंगे. सो इट इज टेम्पोरालिस अलोंग विद द टंग मसल्स. Now this question is a negative question.
नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आपको लगे, नॉट यूजुअली स्किप कर देता है, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइटेड है नॉट, कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च। फर्स्ट आर्च से क्या क्या होता है? स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है, मैलियस इनकस होता है, मैंडिबुलर प्रोसेस होता है, मैक्सिलरी बोन भी होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ रही है एस से, स्टाइलोहाइड। तो हाइड से जो कनेक्शन होता है वो सारी बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स का, वो स्टाइलोहाइड होती है, स्टाइलर प्रोसेस से, और वो हाइड पे आके कनेक्ट होती है। तो यही है सेकेंड आर्च की। फर्स्ट, बाकी सारी फर्स्ट आर्च की है, तो इसलिए ऑप्शन है डी। Which of the following are associated with the second pharyngeal arch? अब second pharyngeal arch में क्या क्या होता है? नर्व क्या होती है? फेशियल नर्व होती है। बाकी सारी चीजें एस से स्टार्ट होती हैं, स्टेपीज, स्टेपीडियस, स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोहाइड बोन, स्टाइलोहाइड प्रोसेस, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, स्टाइलोहाइड मसल, ये सारी चीजें जो हैं वो सेकेंड से होती है। और थर्ड की नर्व क्या होती है? ग्लॉसोफेरिंजियल होती है। तो यहाँ कुछ कुछ ऑप्शन गलत भी हैं। एक ही सही ऑप्शन है कि सेकेंड आर्च की नर्व सप्लाई हमें यहाँ दिख रही है कि फेशियल नर्व से है। So this is the right answer. Then we have branchial cyst. Branchial cyst कहाँ बनी थी? जब हम क्लेफ्ट का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। सेकेंड पाउच जो है वो अपना एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन देता है जो कि एपिकार्डियल रिज से फ्यूज हो जाता है, और उसके बीच में जो एरिया कवर्ड होता है दैट फॉर्म्स अ सर्वाइकल साइनस। और सर्वाइकल साइनस जो है वो सर्वाइकल फिस्टुला भी बना सकता है, या फिर सर्वाइकल साइनस ओपनिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? आर फाउंड अलोंग द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द sternocleidomastoid मसल, करेक्ट। Are formed from a rupture of the membrane between the pharyngeal pouches and branchial clefts. अभी मेम्ब्रेन जो रप्चर हो रही है वो सब में नहीं होती, में रप्चर कहाँ होती है? सेकेंड पाउच और सेकेंड क्लेफ्ट की मेम्ब्रेन रप्चर होती है, दैट इज इन द रीजन ऑफ टॉन्सिल। सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। देन वी हैव आवर रेमिनेंट्स ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट। ब्रैंकियल सिस्ट थायरोग्लॉसल डक्ट की रेमिनेंट नहीं होती, थायरोग्लॉसल डक्ट की रेमिनेंट थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है। आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के फ्रंट में नहीं होता है, कहाँ होता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के एंटीरियर बॉर्डर पे होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल पे होता है। तो बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, सिर्फ ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So that was all about the development and some of the questions I've taken up related to the development of pharyngeal apparatus. I hope I made myself clear, and if you have any queries, you can directly ask me in the comments, or you can send me questions through your this channel. Thank you. Yes, anybody who would like to ask question can type it here, or they can unmute and ask the question. And if you want to ask the question through email or through any through WhatsApp, you can communicate to us. You can forward it to Dr. Farah, and she will answer, and we'll get back to you. We are just waiting for the the queries from the attendees who are there. I think there is no any question from attendees. Basically, it's Sunday, and yes, of course. people People in joined. AMU try to utilize their Sunday just by sleeping. So most of them must be sleeping. There are multiple, even the faculties and students who joined, and then they left. There are students who in the faculties are joined. The students who joined. But maybe the Sundays are the hectic days. They are getting 1 day. Yeah, that is 1 day to relax and unwind. We'll also reviewing the the time of the lecture. Maybe we are doing on the weekdays in the evening. So maybe that would be a better option, because
Sunday, The day scholars who are, their home is close to the college, they are leaving the city and they are going to their obviously. home. And there are students who are staying in the hostels. They have their own personal work actually for getting ready for their whole week next week. So there might be chances, but still, yes, we are getting a response that people are joining and all. Thanks, Dr. Farah, for sparing your precious time because you guys are such a senior faculties from medical fraternities who are joining and motivating us. And we are sure definitely that it is already being recorded on YouTube. I have shared the link with you, and we are, as per our plan, we are sharing the link to all attendees, those who have registered. So they will refer it while they are free in their rooms or in their home, and they are getting advantage out of it. At the end, I just give a good, I just feedback that we are getting good MCQ at the end of the class, and it will definitely, people get advantage how to attempt the questions, because sometimes students are not referring that note which is written in the block, or sometimes they are not reading all the options. Actually they are just read the We are option in the habit of reading the positive things only. We miss out yes, yes. not or no features. Yes, so slowly and gradually they will get all the experience, because they all would be writing their next examination in 2027, 28. Yes. This year the next exam is extended, and I think whether they are conducting or not. But from next year onwards, it must be But happening. for 2K20 batch, they definitely have Yes, to appear for the next of course, exam. of course. Okay, nice, presentation, Dr. Farah, and Thank you. very easy, to understand. We'll connect again on 30th of July with you on the same time between 11 to 1. So we are Okay. signing off for now, and we are not disconnecting the Zoom now, but we are just, closing the record on the YouTube, and we'll join again at between 2 to 4 for Dr. Amit Upadhyay will take the physiology class between 2 to 4 on respiratory system. Okay, thanks. Thank you. Yeah.